We have Swastik over here, Swastik Sharma, and he is going to share with you his journey, how he scored an All India rank of 18 in GATE 2022. So meet Swastik Sharma, everyone. Swastik, hello Swastik, how are you? Hello, sir. I'm good. So can you tell a little bit about yourself first? Yes, sir. My name is Swastik Sharma. I did my graduation from IIT BHU, graduated in the year 2020. And since then, I've been preparing for these competitive examinations like GATE and Engineering Services Examination. And this year, I've got AI ratings. Very good. So what is the marks that you have scored in the GATE? Students are always keen to know that what is the marks that you have to get to score an All India rank under 20 or under 10. So what is the GATE marks that you have obtained out of 100? Yes, sir. After normalization, my marks are around 88.28. So 88.8. You were basically morning 88.28. Afternoon shift. Yes, sir. Mine was morning shift. Okay, so how many marks you were getting in reality, and how after normalization, how much it has come? Sir, actually, I could not calculate how much I was getting actually, but they were around 89 or 90, around that. So since our shift was an easy one, so our normalization reduced our marks. So they might be around 89 or 90. I'm not sure about that. Yes, yes. But according to your GATE score, the exact marks and the exact score was? Sir, exact marks of this one you are asking? Yes. What I was actually getting or after normalization? No, after normalization. After normalization. After normalization, my GATE marks are 88.28 and GATE score might be around 930 something. Okay. So Yes, is this your first attempt? No, sir. This was my third attempt at GATE. Okay. So when was your first attempt? Sir, I gave my first attempt with my college. That was completely from my college only. So that year I scored 141 rank. Okay. Along with the college. Yes, sir. Okay. And second attempt? The second attempt was last one after 1 year of drop. Okay. And I got AIR 30 in that. AIR 13. 30. Yes, sir. 30. Okay. Okay. So did you 30, take any yes. coaching during that time? Yes, sir. I was completely very much familiar with this Grade Up app. And I also the YouTube sessions which were going on. I used to take my notes, whichever thing I found important. I used to jot down in that my short notes. So yes, I was continuously in touch with first Grade Up and now BYJU'S. So Okay. I was Yes. in touch with that. So guys, I like to add one point over here. See, basically one thing to learn from Swastik, that he is being consistently performing good in this exam. And guys, just to your surprise, I'll also tell you one thing, that basically Swastik has appeared for interview of Engineering Services 2021 this year, and he's also very much positive to basically get the rank over there. So guys, basically now he has done everything. Now he wants good wishes from your side, and in lieu of those good wishes, basically he will be giving his basically share point. He'll be sharing his strategy with you. So now Swastik, basically please share your strategy with the students. Yes, sir. So when I started my preparation from my college time, and after we have seen after COVID that the online coaching से अभी बहुत develop हो गए हैं. But this time मैं coaching में था तब इतना हमारे पास उतना वो नहीं था, सारे coachings offline चलते थे. तो totally वो self study वाला mode था मेरा कि जो करना है मतलब मेरे को ही करना पड़ेगा. तो सब कुछ decode books वगैरह मैंने खुद से करी हैं. But जितने भी viewers हैं, जितने भी students हैं, सबसे पहले एडवाइस मैं यही देना चाहूंगा कि जब हम खुद से करने जाते हैं, बुक्स वगैरह उठाते हैं, बहुत टाइम जाता है. तो मेरी सबसे पहली एडवाइस और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस जो लोगों को ये लगी कि आप अपने आप को किसी कोचिंग में एनरोल कीजिए. आजकल हमारे पास इतना फायदा कोविड के बाद से पूरा ऑनलाइन भी बहुत बढ़िया हो गया है कोचिंग का सिस्टम. तो अगर आप किसी भी तरीके से किसी के मन में ये डाउट है अगर कि मुझे मैं कोचिंग ज्वाइन करूं या नहीं करूं, तो 100% मेरी तरफ से ये रहेगा कि आप सबसे पहले तो किसी कोचिंग को ज्वाइन कीजिए. क्योंकि पर्सनली मेरे लिए बहुत हर्डल्स थे सब कुछ को डिकोड करना. आपके पास कंटेंट बहुत सारा होता है. अगर आप टेक्स्ट बुक्स पे जाएंगे तो उसमें बहुत कुछ रहता है, उतना एग्जाम्स में पूछा नहीं जाता है.
तो सबसे पहले तो वहां से आप लोग जाइए। बाकी अगर मेरी जर्नी की मैं बात करूं तो पहला साल वही कि सेल्फ स्टडी से मैंने किया, गेट मेरा फोकस था। इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए मैं एलिजिबल नहीं था, उनका एक एज क्राइटेरिया रहता है, वो मैं सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। तो विद कॉलेज आई न्यू दैट आई विल बी अपियरिंग फॉर गेट एंड नॉट फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन। So I gave that. After I scored 141 rank, I knew that there are some voids that are still left with my education and with my preparation. So after that, I started following the coachings and what all they are teaching and what are my skills. Now, what are my weak topics? उसके बाद से मैंने ये चालू किया कि ठीक है, मतलब मेरा मान लीजिए जियो टेक्निकल में कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं या फ्लूइड मैकेनिक्स में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो मेरे वीक हैं, उनको मैं स्ट्रॉन्ग करूं। और फिर वही कोचिंग, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, शॉर्ट नोट्स, मतलब ये तो एक बेसिक चीजें हैं जो सबको पता होनी चाहिए कि क्या क्या करना है। आप सबसे पहले कोई भी नोट्स पढ़ेंगे, कोचिंग अटेंड करेंगे, वो रिवाइज कीजिए। सेकंड स्टेज रहती है आप प्रीवियस ईयर लगाइए या आपको कोचिंग से कोई मटेरियल मिल रहा है तो आप उसको सॉल्व कीजिए। और फिर थर्ड ईयर रहती है कि फिर आप टेस्ट सीरीज पे आ जाते हैं और उसी बीच आप शॉर्ट नोट्स अगर बना पाए सेकंड थर्ड रीडिंग पे तो वो बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल रहेंगे आपके लिए। मतलब मैं शॉर्ट नोट्स पे काफी डिपेंडेंट था, तो शॉर्ट नोट्स मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट चीज थी। और अगर हम गेट एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो अगर कोई इंसान एक बार भी अगर अपियर हुआ है तो उसको एक बात मालूम होगी कि सिली मिस्टेक्स कितना बड़ा डिफरेंस ले आते हैं गेट एग्जामिनेशन में। बाकी एग्जाम्स आप कुछ भी देंगे, इंजीनियरिंग सर्विसेज देंगे या स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन देंगे, आप 3 4 5 सवाल भी गलत कर देंगे, बहुत डिफरेंस नहीं आएगा, आप कवर अप कर लेंगे। Yes. लेकिन गेट एक ऐसा एग्जाम है जिसमें अगर आप कोई चीज पढ़कर गए हैं तो वहां पे आपको सॉल्व उसको करनी ही पड़ेगी अगर आपको एक अच्छी रैंक चाहिए। जैसे मेरा स्कोर, अगर मैं बिना नॉर्मलाइजेशन की बात करूंगा, मेरा एक्सपेक्टेशन है 89 या मे बी 90 हो, मैं बहुत श्योर नहीं हूँ, बट इतना कुछ होगा। मैंने अटेम्प्ट किया था करीब 95 का, मैं 2 से 3 क्वेश्चन छोड़ के आया था, मैं कर नहीं पाया था। तो व्हेन यू आर अपियरिंग फॉर 95 मार्क्स एंड यू आर गेटिंग 90 मार्क्स, दैट मीन्स कि आपकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा मैटर करती है। और ओवर द ईयर वो मेरी इंप्रूव ही हुई है। जैसे कॉलेज टाइम पे जो 141 रैंक थी तब मेरा नॉलेज बेस भी बहुत कम था, तो उस छोटे से नॉलेज बेस में से सारे क्वेश्चंस को करना वो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो तो गेट स्वास्तिक, एग्जामिनेशन के लिए मैं अगर, यहाँ पे यस सर, आपसे एक दो क्वेश्चंस पूछना चाहूंगा जो आपने बताया। यस तो सर, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स है जहाँ पे बच्चों के डाउट्स आते हैं जनरली, ठीक है। तो पहली यस पॉइंट तो सर, मैं ये पूछना चाहूंगा, जैसे आपने बताया कि बच्चे फोकस नहीं हो पाते हैं, है ना। तो आपने बोला है कि एक कोचिंग को आपको जरूर आपको लेना चाहिए, है ना। तो यस गाइस, सर, व्हाट डू यू गेट फ्रॉम दिस, राइट? यू गेट अ डायरेक्शन। Okay, we provide you the direction to prepare. Okay, if you are preparing from yourself, you are you are going one place to another, okay, for the same topic. So it is a very huge amount of a time waste. Okay, so I would like to add that point. And further I would like to ask one thing, that what made your preparation stand out actually? Okay, so what is the one thing that you would like to tell the students that made your preparation stand out to make go to you to the next level? Okay, we say that now, यस सर। in order to become an extraordinary from ordinary, you just need one little extra. What is that one little extra that made you an extraordinary student? So for me, I would say that my hard work, basically, because if I compare myself with my peers around, then I thought that maybe I put in some extra hours when it comes to preparation. There were less distractions for me. So if I talk about myself, then it will be hard work, sir. That I used to give much time of mine to study. So So that I would is say is was. only hard work sufficient, or you have to uh, do smart hard work also? Yes, sir. Smart work is required along with hard work because Yes. otherwise you will not be able to achieve what you want to in less amount of time. Hard work Yes. will definitely give you, but that will extend your time. Yes. So the efficiency is very important. Okay. So you Yes, need sir. to achieve as much as you can in a less amount of time. Hard work. So I will like to point out that all of you are doing a hard work, right? But are you able to get the maximum out of the time? That is the question, right? And Right, sir. one more thing I would like to ask is that how are you able to reduce your negative marking? So yes, you told that in GATE examination, even 1 marks of negative makes a huge difference in your rank. So Yes, sir. what would you like to say upon this fact, that how did you reduce your negative marking? What helped you Yes, sir. reduce that? Okay, sir. Sir, GATE is all about practice. The more amount of questions you practice, the better you will get in it. The less you will commit your mistakes. So all of the mistakes, I think, जो भी सारी basic mistakes होती हैं, सॉइल के छोटे से फॉर्मूले से लेके या फ्लूइड तक, मुझे लगता है सब लोग पहली बार में उनको कमिट करते ही हैं। बट वो डिफरेंस ये है कि अगर आप उनको अपने मॉक टेस्ट में ही इंप्रूव कर लें तो बहुत बेटर रहेगा।
कुछ लोग ऐसे होते हैं कम मॉक टेस्ट देते हैं तो उनसे वो गलतियां मेन एग्जाम में हो जाती हैं, हम लोग वही गलतियां मॉक टेस्ट में कर लेते हैं तो हम लोग मेन एग्जाम में नहीं Exactly. करते। That was तो my point. I wanted to hear this. The test series, the importance of test series. This is the importance of test यस series. सर, And when you should start, when did you start your test series? When did you start applying your test series? yes sir. So when I was in college and my seventh semester started, it was around July or August. So I started my test series around September. I'm talking about September 2019. My gate was in 2020 Feb. So that was the first time I started my test series. So yes, you guys. So at that particular time, when you are in your September or August, September, at that time you may have completed 2 to 3 subjects of your Yes sir. right. And with that 2 to 3 subjects, you can start with your test series, right? And parallelly, you can also keep on studying and applying your test series also. Yes sir. Rohan sir, now let us take the questions from students. And dear students, you can definitely get benefited from Swastik Sharma, and basically he will be replying to your questions. So we would like to have questions from your side. So Swastik, one person is asking like, what would be your advice to second year students? Yes sir. So I finally made up my mind. Actually, it was second year only that I will be preparing for these examinations, GATE and engineering services. So my plan was to start preparing when we have those summer vacations after a second year. So my plan was initially to start from that time with my preparation of GATE and engineering services. But due to some unavoidable circumstances, I could not start. So I basically started when my third year began. But if I talk about when I was totally focused towards my target, it would be sixth semester, which starts after in our third year, the second semester, which is the sixth semester. So from that time, I started my preparation. So if someone is in second year, I would not suggest you to start preparation from your second year onwards, because you will drain yourself out. So I would suggest if you can start after during the summer vacations, which are after your second year, or maybe you can start onwards from your fifth semester. I think that is a good time, because initial months will be spent on trying to figure out what you need to study and how you need to study. So it is always better to start before time, but not at that time that you will be draining yourself out, because you will have to continue your preparation for second, third, and fourth year. So you can start from third year or maybe vacations. So what were the difficulties that you faced when you first started with the preparation? What was the toughest thing that you found about GATE, right? When you were in your third year and you were preparing, what was the toughest thing that you faced at that point? And how did you start your preparation and how did it progress with 1 month by month? यस सर। सर मतलब सबसे पहले तो सारे सब्जेक्ट्स देखे, अपने सब्जेक्ट बहुत सारे हैं, मतलब अगर आप हर एक की बुक्स उठाएंगे तो बहुत पाइलअप हो जाएंगी, 14-15 बुक्स भी हो सकती हैं। तो सबसे टफ चीज तो यही थी कि मैं इस सबको कवर कैसे करूं, कैसे स्टार्ट करूं, मैं वीकली टारगेट्स बनाऊं, मंथली टारगेट बनाऊं, डेली टारगेट बनाऊं। तो स्टार्ट यहाँ से हुआ था स्ट्रगल। तो कॉलेज में सीनियर्स होते हैं, इसलिए कॉलेज का ये फायदा है, सीनियर से मैंने गाइडेंस लिया था कि चालू कैसे करना है। उन लोगों ने पर्टिकुलरली मेरे को बताया कि इन सब्जेक्ट से चालू कर, ऐसे चालू कर, ये नोट्स बना। तो वहां से मेरे को एक पुश मिला था कि एक्चुअली करना क्या है। तो सबसे टफ चीज अगर आप फिगर आउट कर लें कि प्लान आउट कैसे करना है, अगर आप एक बार प्लान कर लें कब कौन से सब्जेक्ट के साथ जाएंगे, शायद फिर थोड़ी आसानी हो जाती है कि आगे कैसे बढ़ना है। Yes. So first of all, you will pick your basic subjects, okay, which are more fundamental in nature. Okay. With that, you have to make proper notes. Okay. You do not have to hurry. Okay. Even if you are making only 6 to 7 pages per day, but you must understand that those 6 to 7 pages from day to day basis, they compound and they compile a full subject. And with the time, this speed is going to increase. And slowly and slowly you are going to cover up all the subjects. So you need to be consistent throughout your preparation. Even if you are in a third year, right? How much time did you invest in your preparation during your third year? Sir, On a daily basis, on an average, if you tell our viewers who are in their third year or who are planning to start their preparation, how much on an average would you say that you invested in your preparation? okay, sir. Sir, since our college were going on, so we had classes regularly from 9 to 5. Sometimes some hours were off.
But if we talk about after 5, what I used to do, I used to go in my college library because it was difficult to study at your hostel. That is pretty Yes. difficult. Yes. You have all your friends around. So if when I started, it would have been around 2 or 3 hours after my classes. But Yes. as you said, that it will be going to increase with time. So in my fourth year, it was even more. I might be giving my 5 to 6 hours. I would be skipping some of my classes which were not important, and weekends were important. So slowly, I used to increase my amount of time. And last year, when we were in the COVID phase, I didn't have anything to do. So it was a completely day off, weeks off for me. So during that time, I used to give maybe 7 or 8 hours. But if you want to know that how much you should study for these examinations, if you got enough time, maybe 2 years, you can consistently go for 5 or 6 hours. They are more than sufficient. That is what I believe. Yes. But still, if you consistently prepare for even 3 hours also on a daily basis during your college Yes, sir. time also, then also you can achieve Yes, sir. very good ranks, right? Maybe even if you are Yes, sir. more Correct. efficient, even if you are very efficient, then also you Yes, can sir. achieve in the top 100 also easily. So, Yes, sir. I agree. Rohan sir, certain students are asking basically that, sir, when shall we finish? When shall we finish our syllabus? And basically, the second point is how to revise. So, Swastik, can you just tell both of these points in nutshell to them? Sir, about finishing our syllabus, I believe that you can't completely finish something properly. Even जब हम एकदम आखिरी फेज में भी होते हैं, गेट के एग्जाम के 1 महीने पहले भी होते हैं, तब भी हम चीजें सीख रहे होते हैं. तो सिलेबस कंप्लीट करना, अगर आप ऐसे बोल रहे हैं कि अगर एक पर्टिकुलरली आपका रजिस्टर है या कॉपीज हैं, तो मैं तो ये मानता हूँ कि अगर आपका कोचिंग में, मतलब अगर आप कोचिंग कर रहे हैं और आपका वहाँ पे सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया है, कोचिंग वालों ने, टीचर्स ने अगर कंप्लीट कर दिया है, तो अब उसकी एक रीडिंग तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही लगा लीजिए, जो भी टॉपिक है, ताकि वो आपकी फर्स्ट रीडिंग हो जाती है. आपकी सेकंड रीडिंग होगी जब आप प्रीवियस ईयर लगा रहे हैं, मे बी गेट के 1 महीने पहले आप थर्ड रीडिंग लगाएं. तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी रीडिंग्स लगाना चाह रहे हैं, उस हिसाब से आपका कोर्स कंप्लीट होगा. मतलब लेकिन अगर गेट के 1 महीने पहले की बात करें, तो मैं मतलब ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर आप एक अच्छी रैंक लाना चाह रहे हैं, तो आप अपना आखिरी जो मंथ है वो उसको फ्री छोड़ें. उस टाइम आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ना ना पड़े, रिवाइज ना करना पड़े. मतलब ये सिचुएशन नहीं होनी चाहिए. आपके शॉर्ट नोट्स हो, आप उनको रिवाइज कर सकते हैं, बट अगर हम टोटल सब्जेक्ट्स की बात करें, तो एटलीस्ट 1 महीने पहले तो आपका सब खत्म हो जाना चाहिए, along with previous year. one thing I would like to ask you, that what did you think is the toughest aspect of GATE examination? What did you find the toughest part for the GATE exam? Sir, I would only say that silly mistakes, if you do not commit them, you will be easily getting good marks. Because if anyone who has solved the previous year book, I mean, एवरीथिंग इज रिपीटेड ना. जो कॉन्सेप्ट्स उन लोगों ने कवर किए प्रीवियस ईयर में, उससे कुछ हटके नहीं आता. हर साल पेपर में वही आता है जो ऑलरेडी पूछा जा चुका है. लेकिन फिर भी हम गलतियां करते हैं. इनफैक्ट मैंने भी गलतियां करी हैं. मेरी अभी इतनी अच्छी रैंक है, लेकिन पहले 141 थी, उस टाइम बहुत गलतियां हुई थी. तो सर वो सिर्फ मिस्टेक्स की बात है. कोचिंग की बेसिक से बेसिक चीजें कवर हो जाती हैं, क्वेश्चन सामने रहते हैं. Would you say that formula revision, remembering formulas is one of the toughest Yes, things? sir. Remembering formulas is very important. That is the first thing that you should do. Yes. So how did you manage to remember so many formulas? Yes, sir. So I started my previous year during my 7th semester, when I started doing my previous year book for GATE. At that time, जो भी सब्जेक्ट आता था, मान लीजिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स आया है, तो मैं उसको सॉल्व करता था. प्रीवियस ईयर लगाए, उससे मेरे को अंदाजा लग जाता था कि कौन से फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट है, कौन से रिपीटेटिव है. तो मैंने छोटी छोटी सी कॉपीज ले ली थी, जो प्लेन जो अपनी बुक कॉपीज आती हैं, छोटी मैंने कॉपी इसीलिए बनाई थी ताकि शॉर्ट नोट्स मेरे बहुत कंसाइज रहे. मैं बड़े बड़े रजिस्टर लूंगा तो शॉर्ट नोट्स उतने बड़े हो जाएंगे. तो बस सर उसमें मैंने फॉर्मूले लिखने चालू कर दिए थे. मेरे पास अब टोटल 3 से 4 स्मॉल कॉपीज हो गई हैं, जिसमें सारे फॉर्मूलेज जो भी इंपॉर्टेंट है मैं सब लिख चुका हूँ. तो उनको डेली बेसिस पे मैं रिवाइज करता रहता था. उससे फॉर्मूलेज में प्रॉब्लम नहीं आई. So this is the important point, guys, that the most affected aspect of GATE is your formulas, right? You tend to think that you will forget the formulas in the examination, and how to overcome that? To revise on a daily basis, to make short notes. And how many hours? I would just like to ask one last point, that how much time did you invest on revision? Sir, revision, if I talk about short notes, they don't take much time.
if you know, if you have even read them once or twice, I mean, they hardly take a few minutes. If I Yes. talk about myself, hardly take a few minutes. Yes. But on a daily basis, you must be investing, I think, only 30 minutes or 40 minutes to revision, Yes, right? sir. Not Yes, more sir. than Not that. more than So that. Yes, that is sir. all it is Yes, sir. required, okay? You are required to invest only 30 to 40 minutes on a daily basis to your revision of the previous subjects that has been completed. And slowly, all those formulas will transfer into your passive memory. And even if you think that you will not remember it in the examination, suddenly they will come in front of your eyes. This Yes, is the sir. I agree beauty with of that. Yes, sir. revision, right? So Yes, sir. I would hand over to Ankit, sir. Definitely, sir. You told very important point. Like this, I used to also personally feel during my ES preparation that day Yes, sir. before the exam, nothing is basically in the mind, and same every aspirant is telling. Basically, that is same thing. Now, one person, Swastik, is asking, basically, what about virtual calculator? Which calculator you used to use? सर जब ये प्रिपरेशन चालू किया था गेट का, तो जो नॉर्मल कैलकुलेटर रहते हैं अपने, मॉडल याद नहीं है मेरे को, बट Scientific, जो बेसिक, हाँ, scientific जो calculator. साइंटिफिक कैलकुलेटर्स थे, हाँ, तो उस टाइम मैं उनसे सॉल्व किया करता था अपने क्वेश्चंस वगैरह जो भी। लेकिन जैसे जैसे आप टेस्ट सीरीज चालू करते हैं, तो उसमें तो टेस्ट सीरीज में तो वर्चुअल कैलकुलेटर प्रोवाइडेड रहता है, और जो आखिरी के 15-20 दिन थे, तो मैं अपने लैपटॉप में ही खोलकर रख लेता था वो साइंटिफिक कैलकुलेटर। आप सर्च करेंगे, वो जो वर्चुअल कैलकुलेटर गेट वाला रहता है, वो एक अलग विंडो में खोल के रखता था, तो जब मैं प्रीवियस ईयर लगा रहा हूँ तो फिर डायरेक्ट उसी पे सॉल्व कर लेता था, तो उससे प्रैक्टिस हो जाती थी। So That's guys, the point to be noted is while you're preparing, you have to save as much as time you can. So use your scientific calculator, increase your speed, okay? Solve as many questions as you can, practice as much as you can. But during the last 15 days, practice scientific calculator as much as you can. It does not take too much of time. Okay, it only takes 15 days and you will be pro in that. सर मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। अभी yeah. एक ऐप भी आता है जो आप मोबाइल पे इंस्टॉल कर सकते हैं, वो Yes. गेट का वर्चुअल कैलकुलेटर नाम से आता है, तो आप वो इंस्टॉल करके सीधा उसमें प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, तो वो और भी अच्छा रहेगा। Definitely. And Swastik, one last question from one person, Mr Sharma. He's asking, right? Basically, the question is how to avoid distraction from mobile and social media. यस सर। सर वो प्रॉब्लम तो ये वाला सबको होता है कि आप जैसे जैसे ऐप्स इंस्टॉल करते हो उतना टाइम आपका वेस्ट होता है, लेकिन मैं अगर अपना पर्सनली बताऊं, तो मुझे मेरा भी बहुत टाइम वेस्ट होता था फेसबुक इंस्टाग्राम पे। सर कुछ लोग कहते हैं कि आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने आप को, तो कर लीजिए, बट मेरा था कि सर मैं नहीं कर पाता था, तो मैं तो अनइंस्टॉल मार दिया था ऐप्स। स्ट्रेट मैंने अनइंस्टॉल, जो जो ऐप्स मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं उनको हटा के रिप्लेस कर दिया कुछ अलग ऐप से जो थोड़े इंफॉर्मेटिव होते हैं, जो न्यूज ऐप्स होते हैं, क्योंकि आप अल्टीमेटली मोबाइल तो यूज करोगे ही, तो किसी अच्छी चीज में यूज कर लो, तो जो न्यूज वाले ऐप्स है मैं वो इंस्टॉल करके रखता हूँ, टाइम पास उसमें कर लेता हूँ। मृत्युंजय, आपके क्वेश्चन का आंसर अभी भी नहीं हुआ है। मैं एक और क्वेश्चन पूछूंगा अभी, ठीक है? आपको बेसिक मोटिवेशन गेट क्लियर करने की, इंजीनियरिंग सर्विसेज क्लियर करने की कहां से आई? क्या आपको ड्राइव करता था डेली बेसिस? सर डेली बेसिस पे तो मोटिवेशन कुछ कह पाना मुश्किल है कि कुछ मुझे अगर डेली कुछ ऐसा मोटिवेट करे, बट क्योंकि मेरी ब्रांच सिविल इंजीनियर थी, मेरे फादर भी सिविल इंजीनियर हैं, तो हमेशा से मेरे को था कि मुझे इसी एरिया में जाना है, नहीं जाऊंगा तो क्या ऑप्शन है, कुछ ऑप्शन नहीं था, तो एक फियर कह सकते हैं, फियर ऑफ फेलिंग, दैट कैन एक्ट एज अ मोटिवेशन। मेरे लिए तो वही था सर। और आपका कुछ मतलब इंटरेस्ट, आपका कुछ सब्जेक्ट के प्रति कुछ जैसे एक आप जैसे एज वी गो ऑन स्टडिंग, राइट, यू टेंड टू गेट अ कनेक्शन विद द सब्जेक्ट एंड यू लव टू स्टडी मोर, देयर इज अ क्यूरियोसिटी. So I hope Yes, sir. that there must be some that factor also which made you study more, focus more upon that factor, right? So Yes, sir. if you want to success, right, if you want to succeed in your examination, you need to study the subject not just for the sake of solving the question. You need to understand what the subject is asking you to achieve, right? It is a change in behavior that you face while preparing, okay? When you learn so many things, your behavior changes of viewing the world, okay? So you have to love the subject in order to achieve good ranks, okay? Yes, sir. So, Swastik, any last word for the students? Any advice for the future aspirants?
सर मैं सबको हमेशा एक ही एडवाइस देता हूँ, यहाँ भी मैं वही शेयर करना चाहूंगा कि जब भी हम कोई भी नया सब्जेक्ट या नया टॉपिक चालू करते हैं, उस टाइम हमारा माइंड सबसे अच्छे से उसको ग्रैब कर सकता है। आप जैसे जैसे रिपीट करते हैं फिर अपना माइंड उतने अच्छे से ग्रैब नहीं करता है। तो अगर आप कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक पहली बार पढ़ रहे हैं, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, उसको एकदम फुल्ली फोकस होकर पढ़िए, क्योंकि वही आपकी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है और मैक्सिमम आप तब भी ग्रैब कर पाएंगे। जब भी कुछ नया आ रहा है अपना बेस्ट दीजिए उसको पढ़ने में, ताकि आपको बाद में उतना एफर्ट ना मारना पड़े उसको रिवाइज करने में। यही मेरा एडवाइस रहेगा सर। Very beautiful advice. Very beautiful advice, guys. So advice is this: always believe and give your 100% Yes. to achieve 100% from the exam. Whatever time, whatever the situation is, like basically, if you are having fun, if you are watching IPL, please watch IPL with 100% dedication. If you are studying, then leave IPL and please only study. So basically, what will happen? So that thing will definitely give you good fruits. So that was a very well said and very thoughtful advice from Swastik Sharma. And guys, please do wish him good luck for his engineering services 2021 result also, which he is expecting in the coming week. So Rohan sir, finally from your side, anything? So lastly, Swastik, very congratulations. Okay, we are really happy to see our such a bright students, and they are achieving such a great ranks in such a high level competitive examinations. And we wish you all the best, and you get all that you aspire in your life. Thank you, Swastik, and thank you everyone. And I hope that you learn from the journey of Swastik and you are able to implement the same in your journey also. Thanks a Thank you, lot, sir. everyone. Thank you, everyone.